मैंने जब पहली बार पॉडकास्ट के बारे में सुना था तो आई लाइक यार ये क्या बकवास है, दो लोग बात कर रहे हैं और मैं उनको सुनता रहूं, मतलब हाउ स्टूपिड इज दिस। फिर वन ऑफ द डेज मैं शाम को अपनी इवनिंग वॉक्स के लिए जा रहा था, सो आई गो फॉर दीज नेचर वॉक्स इन द इवनिंग। देन आई वाज लाइक यार आज वही घिसी पिटी प्लेलिस्ट सुनने की बजाय कुछ नया ट्राई करते हैं, एक पॉडकास्ट सुन के देखता हूँ, चलो वर्स्ट केस मतलब क्या ही बुरा हो जाएगा। तो आई हैपेंड टू स्टम्बल अपॉन दिस पॉडकास्ट व्हिच वाज विद जो रोगन एंड डेविड गॉगिन्स। तो डेविड गॉगिन्स की उस टाइम में मैं किताब पढ़ रहा था, कांट हर्ट मी, which was quite inspiring for me. His story was very, very amazing. I think outstanding what he's been able to accomplish and achieve in his life. तो मैंने कहा चलो मेरे पास कुछ context भी है, इसका पॉडकास्ट सुन के देखते हैं। तो इन दोनों की कॉन्वर्सेशन में अपनी जर्नी की बात कर रहे थे। दे वर हैविंग a very healthy discussion. जो रोगन एंड डेविड गॉगिन्स, both of them. और 10,000 स्टेप्स मेरे कब चले गए मुझे पता ही नहीं चला। सो इट वाज सो फैसिनेटिंग और मुझे इतना अच्छा लगा वो पॉडकास्ट सुनने के बाद दैट आई वाज लाइक बॉस ये तो गोल्ड माइन है यार। मतलब अगर मैं 10,000 स्टेप्स भी पूरे कर सकता हूँ और एक पॉडकास्ट भी सुन सकता हूँ साथ में, आई मीन व्हाट बेटर। मेरे को लगा कि पॉडकास्ट मैंने इतने सालों से क्यों नहीं सुना। सो आई थिंक आई रेकमेंड एवरीबडी कि अगर आप नहीं सुनते हो तो पॉडकास्ट सुनना शुरू करो। ऑडिबल बुक्स की तरह पॉडकास्ट भी बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको एक नॉलेज, ग्रोथ, एक्सपीरियंस, कम्युनिटी, इन सब का एहसास दिलाएगा। और आपको ऐसे लोगों की कहानियां और उनके साथ इंटरेक्शन सुनने को मिलेगा जिनके साथ शायद आपका और मेरा कभी इंटरेक्शन ना हो, या फिर हम उनसे कभी मिले भी ना, हो सकता है जिंदगी में कभी मिले बट मोस्टली ना ही मिलोगे। इन लोगों की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, क्या इश्यूज इन्होंने अपनी लाइफ में फेस करे, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, किन हालातों ने उनको वो बनाया जो वो बने, क्या रूटीन्स उन्होंने फॉलो करे, क्या प्रैक्टिसेस उन्होंने फॉलो करी, क्या लर्निंग्स थी उनकी। तो इतना कुछ सुनने को मिलेगा ना आपको। तो मैंने पिछले 2 साल से आई थिंक रोज मैं 3 घंटे कम से कम पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। 2 घंटा जिम में हो जाता है, गाड़ी में ड्राइव कर रहा होता हूँ तब सुन लेता हूँ, फिर शाम को वॉक पे जाता हूँ तब भी मैं पॉडकास्ट ही सुन रहा होता हूँ अपने हेडफोन्स पे। एंड टुडे आई एम शेयरिंग दोज 8 टॉप पॉडकास्ट दैट आर देयर ऑन माय लिस्ट विद द स्टोरीज ऑफ दोज गाइज which gave me that confidence, self-belief, exposure, learning, that I'm sharing these guys with you so that you can also get the same thing. और आप किसी भी इंडस्ट्री से आते हो, आप अपनी इंडस्ट्री के लीडर्स को ढूंढ सकते हो। मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब और वो किसी ना किसी से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी कहानी के बारे में। एंड यू कैन राइट टू देम इन द कमेंट्स। मोस्टली वो रिप्लाई करते हैं या फिर आपको उनका ईमेल मिल जाएगा वहां से। राइट एन ईमेल टू देम, कनेक्ट विद देम। तो सबसे पहला है द टिम फेरिस शो। टिम फेरिस के बारे में मुझे पता लगा जब मैंने उनकी पहली किताब पढ़ी थी। इट वाज कॉल्ड द 4 Hour Work Week। मुझे उससे बुक से काफी कुछ सीखने को मिला था कि कैसे आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने काम को कम कर सकते हो और अपनी लाइफ पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। बट इन जनरल व्हाट टिम फेरिस टॉक्स अबाउट इज रूटीन, प्रैक्टिसेस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ केयर रूटीन्स। ही टॉक्स टू अदर पीपल एंड हिज गेस्ट्स and understands what kind of routines have they followed, what kind of strategies have they formed in their lives. So he's quite interesting. वो questions बहुत रिसर्च करते हैं वो अपने गेस्ट के ऊपर। He says that he does like 20 hours of research before he gets into any podcast, which is great, and it's been really, really enriching for me. I've seen, I think, he's got a lot of episodes on his podcast. He's actually, I think, the number 1 or number 2 podcast in the world about routines and disciplines and self-disciplines of life. बट मैंने आई थिंक 30-35 पॉडकास्ट उनके सुने हैं और चलते रहते हैं मेरे उनके पास, जो मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगते हैं, जो मैं जिनसे रिलेट कर पाता हूँ, मैं वो सुनता रहता हूँ। नेक्स्ट इज डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन। इनके बारे में मैंने रिसेंटली एक पूरी वीडियो भी डाली बिकॉज ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग and I'm really thankful to him that he's putting out all this knowledge. He's a professor at Stanford School of Science और वहाँ पे अपनी लैब चलाते हैं। He's a professor of ophthalmology and neuroscience. Fabulous human being. His knowledge is beyond par. He's broken down human body and the way it behaves to different circumstances with the help of science based tools, and use those tools to implement in our lives and make those practices easy for ourselves. तो इनकी टॉप 8 लर्निंग्स के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया क्योंकि मेरे लाइफ पर इनका इतना इम्पैक्ट रहा और मैं अभी भी सुनता हूँ इनके नए पॉडकास्ट आते हैं जिन चीज़ों को पर्टिकुलरली मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। इट्स बीन लाइफ चेंजिंग। डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन, चेक हिम आउट। नेक्स्ट है डीप डाइव विद अली अब्दाल। एंड अली अब्दाल का चैनल मैंने काफी पहले डिस्कवर करा था। बिफोर आई वाज अबाउट टू लॉन्च माय यूट्यूब चैनल, ही वाज एक्चुअली वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस आल्सो। मेडिकल साइंस, ही वाज ट्राइंग टू बिकम अ डॉक्टर बट ही वाज अबाउट टू, बट देन ही फाउंड हिज लव फॉर यूट्यूब। ही वाज ऑलवेज अ हसलर, मेकिंग मनी व्हाइल ही वाज 13 years old, which is so great to listen to. He's inspiring and he's created his niche in productivity. Very interesting, very knowledgeable. Check him out.
Alright, so next is Tom Bilyeu. I came across him, YouTube recommendation के through मैं पहुंचा इन तक. He is also an entrepreneur who's created like $3 billion companies in his journey. And the way it started his journey was also very fabulous. He talks about how his mindset was a big hurdle that he had to come across, how he managed to create a $1 billion company and then he sold it and now he's creating another one and he's pursuing his lifelong passion of becoming a content creator. So he mainly talks about strategy, self-discipline, and learning about self-discipline. Is a good guy to spend time. Alright, next है Joe Rogan. His handle is called Joe Rogan Experience. He's fun, yeah. He's such a hustler, man, where he comes from. He's a fighter. He's a podcast host. He was a UFC commentator before this. So Joe Rogan mostly invites a lot of celebrities, industry friends, fighters, athletes, authors of books. I think the fun part about it is always smoking J's while having a conversation. And he promotes, smoking up, which is something that I don't promote and I'm against. But actually, one of everybody's personalized experiences. It's legal in the USA, so they do it while they're on the show as well. I remember एक episode जो मैं देख रहा था, Mike Tyson was there in the show, and they both were like having a laugh and blast and while they were talking about it. Very on the spot kind of a guy. Interesting conversations. So you guys can also check it out. Joe Rogan is another beautiful podcast to listen to. Alright, next is Jay Shetty. He is the #1 health podcast in the world. And he's got Indian roots, British Indian roots, being in a positive mindset. He was a monk for about 7-8 years in his life. He says that his purpose in life is to actually, help people live a more healthy and fulfilled life. जैसे I remember a few episodes that I was looking at, Kylie Jenner was there on the show और हमें तो लगता है कि यार वो $1 billion अपने एक brand में बना चुकी है. The kind of things that you go through even when you're sitting on a mountain top, people are mostly depressed because life at the top is very depressing and lonely because you've actually gone up the ladder by either walking on people या फिर you cut away from people because you had to. तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचना और बात करना बहुत ज़रूरी है जो I think जय शेट्टी बहुत अच्छे से बात करते हैं और काफ़ी मीनिंगफुल पॉडकास्ट है. So if you want to explore this side of life, which I think is very important, check out Jay Shetty. Okay, so next is Rich Roll. Interesting story. He was a recovering alcoholic till the age of 31 and he had a few cases of relapse in his life. He was a lawyer pursuing, law in a corporate career, but did not feel like it ever. At the age of 51 today, he is super healthy. He was named one of the fittest guys in US. अपना experience share करके और अपनी life को transform करके, he has today become one of the biggest podcasters in the world. तो interesting podcast, interesting guests on his show as well. और एक अच्छा perspective सुनने को मिलता है. मुझे inspiration मिलती है कि मैं अगर आज 35 पे होके कुछ उखाड़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, लेट नहीं हूँ मैं. I found my purpose in life and which is one of the best things you can do. So this is another guest that I would recommend. Alright, the final podcast that I recommend that you should listen to is Diary of a CEO, Steve Bartlett. He's a British guy and he does some really, really good, interesting conversations. It's funny how he started it in his basement and his tagline is that I hope nobody's listening and if you are, then you keep it a secret. That's the first time that he recorded a podcast ever sitting in his basement and that's the line that he said because he didn't know if anybody would listen to it. But now it's become a tagline relevant with his podcast every time. और ये वो कहानियां लेकर आते हैं entrepreneurship के बारे में, particularly CEOs ranging from your Richard Bransons of the world to Elon Musk of the world. Very, very interesting conversations. So interesting to learnings of those guys and understand how they've been able to build their companies. What are the daily practices that they follow? What are the hardships that they've been facing? How they've been able to resolve them? तो ये थे मेरे top 8 recommendation of podcast अगर आप search कर रहे हो ढूंढने के लिए. And I hope you found this video useful. I hope you will be able to listen to some of these podcasts and find time for it. Instead of listening to music on repeat, I recommend कि आप podcast सुनना शुरू करो. और मेरी journey में अब next है audio books. अभी तक किताबें पढ़ता रहता हूँ मैं तो that is a beautiful way, but I would also like to listen to audiobook at a 2x speed. It helps me save time also. And so tell me in the comment section below. I look forward. And this is me, Rahul Badesra, signing out. I'll see you guys in the next video. Until then, remember, life is more fun when you're at the top of your game.